सो आप लोग को स्क्रीन विजिबल है अभी? देखो तो बता देना मुझे क्या। हाँ प्रिंस, दिखाई दे रहा है। थैंक यू सर। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दो तीन चीज़ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैनवा के ऊपर खुद की वेबसाइट किस तरह बना सकते हो। सी ऑन द कैनवा ना वेबसाइट जो आप बनाओगे ना वो अभी बीटा वर्जन में, राइट। कैनवा पे जो आपको ऑप्शन मिलता है वो बीटा वर्जन में, मतलब एज उसको टेस्ट कर रहे हैं कैनवा वाले। पर यू कैन मेक योर ऑन वेबसाइट हेयर, सिंगल पेज वेबसाइट यू कैन मेक। And our second topic is today blog post. How you can make your blog post photos, and third is how to create a landing page. See, on the website and landing page, nothing more difference. Landing page और website में कुछ ज़्यादा difference नहीं होता. I just show you something. This is my website, okay? This is my website, and this is my landing page. I'll just show you something. It's nothing different between website and landing page. In the website now you have lots of things, means you have to show everything, your service, your product, your everything what you want to sell. You can what you want to give the service, what you want to sell, everything you have to show on the website. Okay. Here you see now I have lots of links. If you click on there now you are करने का मतलब आपको मेल लिखना। मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, राइट। यहाँ पे मेरा जो भी था मैं उसको लिखा हूँ, राइट। हियर आई हैव टू माय पेमेंट लिंक। मीन्स जो मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं उसके बारे ही लिख रहा हूँ इसके ऊपर, उसके अलावा मैं किसी चीज को नहीं कर रहा हूँ। इन द लर्निंग यू हैव टू ओनली नोटिस फोकस ऑन द वन थिंग, अंडरस्टैंड और नॉट। लर्निंग पे आपको सिर्फ एक चीज को ही नोटिस करना होता है, जबकि वेबसाइट के ऊपर आपको जितना इन द लर्निंग पेज here I just wrote the link. Okay, here my payment link. I just give the information here. Here is payment link. Okay, here I have to give the bonus, and here my payment link. Okay, so लर्निंग पेज से क्या होता है, जब आपकी कस्टमर जब आती है लर्निंग पेज पर, उनको ना और कुछ नहीं करना चाहिए। जस्ट टेक एग्जांपल, अगर आप जाते हो शॉपकीपर के पास ना, किसी शॉप में अगर आप एक जूता खोज रहे हो, अगर उनके पास खुद की ब्रांड का जूता है तो आप उनको सजेस्ट करते हो। अगर क्या करते हो आप ना 5 या 6 जूते Sir, देखते हो। kindly speak in English, sir, please. Okay. I'm just saying now, a landing page is like you have to show only one product. Okay, don't do the thing. Don't give your customer to go the other page. Okay, see, if you will click anywhere, na, you only going on my payment link. Otherwise, you are not going anywhere. Okay, you are only going on my payment link. This is called landing page. Okay, this is called landing page, because if you want to sell something, if you want to give up any service, you want to do anything on the your landing page, you have to only focus on the one thing. Don't go for other thing. So this is called landing page, and this is called website. You have to show everything. You have to show everything, like your service, your product, your contact list, everything you have to show the you can show on website. Okay, if you go on my there now courses, here is my digital marketing course. Okay, here's my digital marketing course. Okay, so here I can show everything about us. You can read me about us. Okay, but on the here now you haven't see here my menu. Okay, I haven't give the menu also, because this is my landing page. I have to focus only one thing. So if my visitor and traffic will come on this page now, so they have only focus on the one thing. I don't want to give the other thing. If they I will give the other option, so they can click the other thing and they go for the other thing. So it's not for the good. Okay, I have lots of example for the learning page. I will show you, because really love to learn new things and teach to new people. See, this is one also
real estate sales. Okay, landing page. I can give you the example of this. See this. This is logo. This is the he writing something, and here is the payment link. Okay, you can see he writes something, and here is the payment link. He writes something. Here is the payment link. So you have to now do landing page on your only for one product. Don't use it for other things. And website you can use for everything. What you want to make, you can make. On the Canva, what you have to do, you can only create for one page website. Okay, one page website. It's a beta version now. Website in a beta version means it's a testing and trial. I just going on my free account. Okay, and okay, it's a next part. Fourth topic is how you can design your business card. Okay, and fifth topic is how you can make a powerful resume. But I will not guide you more in a resume because you are a teacher, so I don't think so. I will resume I will confirm. I just saying the website. Okay, just type website. See, here is your website. I just click on website. Okay. Uh, it's similar to a website is also landing page. Okay, there are lots of paid version is now, but you if you say here na, it's a beta version now. I just focus on the free version. Okay, just click here free. Okay, if you have only one service now, if you want to make your like a portfolio on website, so you can use this type of things. Okay, actually it is free, totally free. I'm saying this is a paid one, and this is free one. You can use this one. Okay, it's a good one, also looking good. I just saying this is also free one. If you are saying now you are selling something, you have some shop, like you are selling something like a kurti and something. I just now when you attend my digital marketing class, there I have to explain everything about the selling, about the Facebook marketing, Insta marketing, Google ad, what is Google ad, what is Facebook ad, how you can make your own website like this, right? On the this type of website. If you want to play the long term in the digital world, so you have to buy our website. Okay, for the आपको वेबसाइट बाय करना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म खेलते हो. अगर आप कुछ नहीं चाहते हो, मतलब यू हैव द शॉर्ट टर्म समथिंग इज देयर, देन you can come create as one page. Okay, but here you can see this is my domain name. Okay, this is my domain name, but here you can't get your domain name. Your domain name is like these things. Okay, if you will send this link to anyone, so they can access your link page. Okay, so I'm just using one things. Everything is paid one because it's a beta version, so it's also free one, helping you the best. Okay, just I will take this one. Okay, I just take one. See, your design will be same. आपको डिजाइन सेम करना है. You haven't you get anything more, but what I want to here to show you is how you can make this is like a page. Okay, this is like page. This is second page. Just clicking on the second page. This second page. This is third page. Sorry, this is third page. Third. This is fourth page. Okay, and this is fifth page. Okay, so I just going on my first page. Just I'm creating my my website. Okay, this I will come here and I just repeat. Okay, just saying start from just I got there in digital. Let's go. Just right click this one. Okay, I just saying let's grow together. Okay, I just make it small so it's look good. So it's look like something like this. Okay, you can also change the image of this background. I just click delete. Okay, you see the I just delete the image. Okay, if you will just click and deposit
Okay, so this is your image. You can choose any image. I just going there and just try searching business, BUSIN business. Okay, so I can use any image. I want to use this type of image. Okay, so I can, what I can do here now, I just stretch, I just put here. Okay, just make it background. Just fix the position. I said it, this is my position. Okay, you can make it more large. Okay, just drag it so it looks something like this, and just send to back. Okay, just you also do replace as a background. Okay, so it will be by default background. So this is my hair, it is now. What I can do here now, I just decrease the transparency. Okay, so it's look like something like this. Okay, this is my first page. Okay, this is my first page completed now. I just doing to, I wrote the company name. I'm just saying this is I can also delete this photo, and I can use my photo or my own photo about my company photo. Okay, just saying this is a company profile. I can use anything here. It's totally editable, and I can use anything. I just not write anything. I just copy this thing. Okay, wait, what I can do here, I just type, I just copy this content. Okay, it's a more thing. It's much. It's good now. Company profile. You add digital those and something like this, and I can use the from here. Okay. See, if you are, I think here no one is like a freelancer. I think you all are teachers. So I just also teach the beginner of digital marketer. If you are means if you are like a freelancer, if you want to working with some company, some restaurant, something, some local business. So what you have to do there, just to make this website and give as a gift to your client. Okay, they will be happy. Okay, they are giving something free, so they can in the future they can want your service. Okay, they can pay you for the service also. So I also teach my the in my digital marketing training how you can uh, get your client in easy way, everything. So here see now, this is the learn more button. Okay, what I have to do here, you can also create your learn more button. Okay, I just saying you how you can make your learn more button. Just click on element. Okay, just take a shape like which type you want to make button. I just saying I want to make this type of button. Okay, see here it is. I just keep it here now. Now I can make it small. Okay, and what I want to write here, you just come and write. Someone is waiting on meeting. Okay, what do you want to write here, just write, I just saying the call us. Okay, just saying I just saying you want to call us. See, I just type here. Okay, so I can use this things as my button. Okay? If you click on this one, see here you can get the link. Okay, just click on the link, apply your link. I just saying I want to give my link, www.digitaldost.in. Okay, so it's my link now. I just click on apply. If you will click on here now, you can come on my this website. Okay, on my this link. So I just deleting this one because I just want to show you. Now I just click on here and I just give my link one, this one. Okay, it's same, or you can paste your link here and just apply. Okay, so this is my second page is completed now. I just use my image here. It's upon you which type you want to make your business profile, business, and anything. You just use this one. Okay, so this is my client report. Okay, so I can use my client image and client company name in his team. Everything I can use here. I just leave these things also. This is our service. Which type we are service giving? So I can, it's our service. You know, I can write here. I also giving service like a email marketing. Okay, I just giving the email marketing. So I can write here my email marketing.
Okay, I also giving the social media marketing na, social media marketing. I can write my social media marketing. Marketing. Okay, sorry, social media marketing. And you just also write third one is I just using my uh, from here, and you can see a website web development. Okay, website designing. I say website design. Okay, I can route my service. Okay, you have, if you have lots of service, then just make it small, and you can copy this one, and you can uh, here also give your service name. Okay, so I just want to, this one is like this one. Okay, you can also write here. See, if you click on here now, you see you can do one group. Okay, now you can, if you click one thing now, it's really clickable. Okay, you can use, see, this is a line, this is a line. Okay, nothing is, this is a only line. You can use this line. Okay, this is a number, you can use number like if you want to use this type now, I just saying 03. Okay, and I just make it to some like this one. Okay, I just change the color, so it's looking good. It's look like something like this, no? This is something bold, so I will do bold. Right, so you can make this type of also. If you have any doubt, just let me know. Okay, I love to help you. So this is my fourth page is completed now, and this is my fifth page where I have to give them my contact list, contact okay, everything. So this is my address. I just leave the address, and just I just want to put my phone number. Just saying 91 plus 91. Okay, at 936870719. Okay, this is my contact number, and this is, I can also write my email ID a digital roast. Okay, dot in. I can write my mail IDs here. Okay, so it looks good now. So see, this is very simple. You can create your website here. Now, how you can publish your website from here? If you will click in publish your as a website, just click on here, and here they give you the 2 or 3 options. See, website is a beta version, no, right? It's a beta version. It's not a proper in a working way, you can say, but you can use. And I also use these things for my client. If I just see, if I have a client now, if I'm just thinking this website, this client is as a, my, for me as a potential customer, they can buy my service also. So what I can do here, I just come here, I just create a website, look like a website for him. Okay, and I just send to him just saying, sir, this is your website. In future, if you want to service, na, I will create a look like this type of website. Okay, so it's a chance, 80% chance they will buy my service. Means they are saying to, yeah, you can work with me, you can work in my company or anything. They have small business, they can offer me. Okay, so I really using for this one for my client. Okay, see, this is a presentation, you can use as a presentation also. Just I'm saying open website. Okay, see, here you can give your presentation also. If you want to give the presentation, you can give as a presentation. Okay, so this type you can give here. If you want to make your website like something scrolling means they are this is not scrolling, so you can make website like this one, or this one also. If I will open, I just cut this one. Okay, see, here it is my website, and this is your link now. If you want to give the website link, na, so this is you're going this is your link. Just copy this link and send to anyone. If they will click on this link, na, they will come on this page. Okay, so it looks good now. प्रिंस See, सर, yes sir. प्रिंस, ये जो जो इतना बड़ा जो लिंक है, इसको हम बिटली में जाके शॉर्ट भी तो कर सकते हैं। Yeah sir, you can do शॉर्ट कर सकते हो। ओके, सो अब मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करोगे ना, याद है आपको मैंने यहाँ पे लिंक दिया था अपना, लाइक यहाँ पे मैंने here I have written my link. So if I will click on my link, na, see here on my second website. Okay, this is my first, sorry, my website. I am just comment this way. Just click on link. You are here now. So it's working properly. See, this is my website. Okay, open here.
So this is the type of something look like a good. It's also a hair animation and इसमें प्रिंस कितने पेजेस हम लोग here कितने your पेजेस contact जोड़ list, सकते हैं contact इसमें? number, email ID. Only one page, sir. Only one page. Only one. This is in a classic. See, uh, as a if you want to use as a your landing page, na, then this is good. This is good because here you haven't mentioned your mail ID. Sorry, mention your navigation menu. Okay, nothing you have mentioned here. Just focus on the one product. Okay, if you want to sell your service product anything, just focus on the one thing. Don't give your client, your customer to other thing. If you offer other thing also, na, they will come there and they will see the other thing also. Okay, so if you are making a landing page, so just select this one. Okay, scrolling. If you want to make like something is look like a good one, so just click on classical navigation. Okay, just open website. See here what you get here. See, I can scroll. See, this one is na, this one bar. It's a only small one. If I will click on about page na, so I will come on my about page. This is my company profile. Okay, I will just scrolling this only this much. If I want to go on my contact page, so I just come here and this is my contact page. Only one screen website is here now visible. Means it's only one screen. Okay, I just see only one this much. One more. See the my scroll one. Okay, I have only one, this much option. If I want to go my service, so it's my service now. Here it is. Is title your page. Okay, that's it. But you can't customize this one, and so that's why I'm saying it's a beta version. If you want to use, you can use this one thing, this one for your business. This one also good. See, it's a link is clickable. Okay, you can click your link. And other thing also is here now. It's a standard. Okay, it's like same. It looks same. So this one is enough. Here is one option you can, if you scroll now, then it look like something like this one. If I am on the service, so it's showing the service is a black color. If I will go on contact, so it is showing the contact black. Okay, so you can make as a your website here, and nothing different between the, I'm just again saying to you, landing page and website is the same. If you want to use as a this thing as a website, a landing page, so just go and just click on the scrolling. Okay, I saw nothing different between the on the canvas, nothing different. Okay, because you have only one page and you have to showing the only one thing is here. If you want to give your payment link, na, you can give the payment link also. If I want to mention here on my payment link, I will give the payment link. If I want to give the link here on the company file, I can also give the link here. Today I get a question, Prince, how I can make a link in a word and in a photos. Just I will saying to you all. Here you can make the, if I want to now give link on this photo, let's see there. If you click on the link, click on the photo, go on link and give your link here and just apply. Okay, so after your link, it will be clickable. Okay, just saying I just want to give the link like this one. Okay, just go home and okay. So this is my landing page. I hope everyone is visited this website. Okay. So what I have to do here now, if I want to use link on my this photo now, so just going here and just put my link here. Just apply it here now. If I want to give in this word, okay, click on click on the sentence and just go here and see this is the link. Okay, I just apply the link here now and just publish your website. Okay, I just scrolling. If you want to do, just go and scrolling, and I just cut this all page. See, it's here now. I just go on the down. See, if I will click on the page now, see at that time what happened here. If you all see now, my just see here it is something showing the editable. Okay, if you click here, you can see the mouse
size. Okay? If you will click on the let's work together, they will make direct on my website. Okay, I will click on this page image, so it's a new window open here. It's easy or not? If you have any doubt related website, you can ask me, then we will discuss other topic also. सर पेमेंट लिंक कैसे क्रिएट करेंगे? हाँ Sorry, सर, sir? नहीं समझ आया। पेमेंट वाला लिंक जैसे आपने हमें भेजा था ना पेमेंट का, या हाँ फिर कोई और लिंक अपनी वेबसाइट का दोबारा से इसको रिपीट करो। कहाँ से आप किस ऑप्शन पे गए थे? ma'am, just see here. Where you want to put the link? Just say me. I will put their link. आपको लिंक कहाँ पुट करवाना है? यहाँ पे मैं पुट कर दूँ? चलो यहाँ हाँ पे देख रहे हो कहीं पे कंपनी, भी। कंपनी हाँ प्रोफाइल, ठीक ठीक है, है? जस्ट क्लिक ठीक हेयर। है। इस ये अभी ना ग्रुप में, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, इसको अनग्रुप कर लेता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये ग्रुप है, ठीक है? कंपनी प्रोफाइल, जस्ट क्लिक इन दिस सेंटेंस। देख रहे हो आपको 3 डॉट यहाँ पे, इसके हाँ ऊपर क्लिक जी। करो। आपको यहाँ दिख रहा है ये लिंक टाइप में कुछ, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है। जस्ट गिव योर लिंक हेयर एंड जस्ट अप्लाई। ओके, नाउ इट्स विल बी क्लिकेबल। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ना लिंक देने के बाद ना आपको कुछ यहाँ पे ना डाउट्स आ रहा है, ठीक है? अंडरलाइन आ रहा है। अगर आपको उसको हटाना है ना, सिंपल आ जाए यहाँ पे, देखो ठीक है, अंडरलाइन ये हो रहा है, इसको आप हटा दो, अंडरलाइन हट जाएगा और ये लिंक अभी वर्क करेगा। अगर मुझे इस इमेज के ऊपर देना है ना, इस इमेज के ऊपर, तो मैं हाँ लिंक जी। इमेज को क्लिक करूंगा एंड सी हेयर इज द लिंक ऑप्शन। I just लिंक click on this link and just I will put my link and just apply it. Okay, I अप्लाई। just showing you again on my, see this is second page and this is company profile. I'm just saying here, here it is now. प्रिंस सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम कोई भी प्रोग्राम का पोस्टर बनाते हैं तो उस पे भी लिंक का यही तरीका रहेगा? नो मैम, पोस्टर में लिंक वर्क नहीं करता है। आपको पीडीएफ यूज करना पड़ेगा। अगर आप यूज करते हो लिंक पे, वहाँ पे आपको हाइपर नहीं, लिंक जैसे मिल मान लो जाते हैं आपको। हमने एक प्रोग्राम रखना है और उसे हमें उसी पे लिंक हमने रख दिया, गूगल मीट का लिंक डाल दिया, तो मैम यही वहाँ सेम पे ऑप्शन आप क्या, काम करेगी? वहाँ, नो मैम, नो मैम, अगर आप पीडीएफ नहीं। पीएनजी करते हो या जेपीजी करते हो तो आपका यहाँ वर्क नहीं करता। अगर पीडीएफ करते हो तो वहाँ पे वर्क करने का चांसेस होते हैं, पर आप पीडीएफ किस टाइप का यूज करते हो वो भी डिपेंड करता है आपका। अच्छा, ओके, तो तो फिर पीडीएफ में कैसे आपको वर्क कर करते जाएगा। हैं? तो आपको पीडीएफ एज ए पीडीएफ डाउनलोड करते हो, पीडीएफ में लिंक वर्क करती है, ऐसे वर्क नहीं करती है लिंक। पीडीएफ में वर्क करती है लिंक? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। देखो अगर आप पोस्टर बना रहे हो ना, पता क्या कर सकते हो? आप पोस्टर बना रहे हो ना, तो यू जस्ट मेंशन योर, आई जस्ट करके सेइंग, आई दिखाओ सर। जस्ट, इस पे आप अपना गूगल मीट का लिंक डाल के दिखाओ। जैसे अभी हम इस क्लास से ज्वाइन हुए हैं, मान लो एक पोस्टर पे ही आपने आई सिर्फ जस्ट लिंक सेइंग, हमने कहीं पे किया। I am just saying, na, ma'am, just listen me. I just saying, na, I want to give ओके। them my Google link meet. I just saying, just I can mention my Google link meet. Okay, just saying Google meet, and I just mention my code. Okay, I can mention my code here. I have the code of this meeting. Okay, so अगर कोई किसी को भी लिंक चाहिए होगा ना, they just come and they just use this code for my meeting. Okay, अब ये लिंक यानी काम करेगा? ये क्लिकेबल लिंक नहीं है, ये मैंने कोड दिया अच्छा। ताकि अगर किसी को भी चाहिए होगा ना, तो वो सिर्फ क्या करता है, यहाँ से इस कोड को पढ़ करके वो अगर वो मीटिंग में जाकर के इसको देता है और अप्लाई करता है, ज्वाइन बिना क्लिक करता है, तो या जाकर उसका एक मीटिंग में ज्वाइन हो सकता है। ये लिंक अच्छा, क्लिकेबल नहीं है। और नहीं, और अगर इसी ऑप्शन पे जाके मुझे डायरेक्ट गूगल मीट के लिंक के साथ जुड़ना है तो फिर पीडीएफ फॉर्म में करना पड़ेगा इसको? हाँ, उससे तो आपको पीडीएफ फॉर्म में करना पड़ेगा, पीडीएफ फॉर्म करके में लिंक दिखाओ। कर। ओके मैम, सो मैं ना एक काम करता हूँ, ठीक है? अगला टॉपिक में ना डिस्कस करता हूँ, ठीक है? अभी इसमें ठीक है। किसी को दिक्कत होगा? ओके, हाँ सर, जी, ठीक है। ओके। अनुप सर, आपको कोई दिक्कत था अभी? नहीं सर, अभी अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे सिर्फ ये था कि सर, जो एक तो आपने वो लिंक डाल दिया जिससे हम उस पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, या हम उस पे जा सकते हैं अपने लैंडिंग पेज। सेशन पे जा सकते हैं। हाँ सर, लेकिन सर अगर पेमेंट लिंक डालना है तो पेमेंट अच्छा लिंक कैसे डालेंगे? सर, सेम है, जैसे सेम जैसे सर, मान लो कि, हाँ सर, नहीं जैसे भी आपने हम लोगों ने पेमेंट की थी आपको, तो वहाँ पे जस्ट कुछ भी नहीं, डायरेक्ट सब कुछ आ गया, हमने कुछ ज्यादा मेहनत की नहीं। सी दिस इज माय पेमेंट लिंक। ओके, आप लोग हम्म। सभी ने इसको देखा होगा। दिस इज माय पेमेंट हम्म। लिंक। आई जस्ट कॉपी दिस लिंक एंड आई जस्ट कम ऑन हियर, सर ये ऑन हियर। पेमेंट लिंक आपने बनाया कैसे? हाँ, यही पूछ रहे हैं। ये कॉपी वाला तो चलो सर ये ठीक है।
सर ये मैं पर्सनल से दिखा रहा हूँ, ठीक है। आई ठीक थिंक मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो चलो कोई मैंने बात दिखा नहीं, दिया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ऑफलाइन बात कर सकते हैं इस पे सर। ओके सर, मैं बता दूं, ठीक है। एक रेजर पे गेटवे, ठीक है, पेमेंट गेटवे है, और एक इंस्टा मुझे पेमेंट गेटवे है। हाँ हाँ, ठीक, आप ठीक इसका है यूज सर, करके ठीक है। ना आप इसका ओके यूज करके ओके, ना आप अपना लिंक बना सकते हो किसी भी जगह पे। ठीक है सर, ठीक है। इंस्टा मोजो है या क्रेडिट कार्ड है, रेजर डेबिट पे, हाँ। कार्ड है, उसका उसका बना नहीं सकते हैं। नहीं सर, ठीक है सर, ठीक। वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वो अलग हो जाता है। रेजर पे क्या है, अच्छा, पेमेंट गेटवे, देखो यहाँ पे ना, पेमेंट गेटवे, ठीक है। आप ओके इस पे ओके। तो किसी भी टाइप का पेमेंट, आप सर इंटरनेशनल ये कोई नेशनल वेबसाइट है? पेमेंट ले सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, ये एक वेबसाइट है मैम कोई एक ये? सर्विस है। यस मैम। रोजर पे है ये। यस मैम। यस सर, रेजर पे। रोजर पे है, ओके। ये सर कुछ सो चार्जेस आपको लेता है, मतलब कि हाँ हाँ जी, चार्जेस बहुत कम लेता है, ये मार्केट में नया है और ये इंडिया की वेबसाइट है, तो आप इसे विश्वास कर सकते हो। और ये चार्जेस हाँ बहुत कम लेते हैं, आप ना इसका आगे पढ़ सकते हो, क्या क्या इसका डॉक्यूमेंटेशन है, आप उसको पढ़ हाँ सकते हो। तो पता है आपको, यहाँ पे आप जो लिंक पेमेंट की होगे ना, यहाँ पे जाकर मैं पेमेंट करता हूँ, तो ये हाँ आपको हर चीज ऑप्शन देता है। यहाँ पे आपको हर चीज ऑप्शन देता है, आपको किससे करना, नेट बैंकिंग से, पेमेंट से, यूपीआई हाँ से, ये सारी डेबिट कार्ड से। ऑप्शन आई थी हमारे हाँ। पास। हाँ हाँ यस हाँ। तो मैम। तो आप हमें इसीलिए ऑफलाइन बता देना सर, जब रिकॉर्डिंग खत्म कर दोगे ना, कोई बात नहीं। ओके मैम, ओके, आई विल ठीक है आई सर, विल ठीक है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट सर। थैंक यू। तो सेकंड थिंग, एनी वन, अगर आप लोगों में और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हो। ओके, आई थिंक नो वन हैव एनी डाउट्स नाउ। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको इफ यू कल आर को सर ब्लॉगर। लैंडिंग पेज बनाएंगे तब। यस सर, डेफिनेटली सर, प्लीज कॉल मी प्लीज, आई डोंट सर हैव। कल को लैंडिंग पेज बनाएंगे सर, उसके बाद फिर आपसे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर पूछेंगे। यस सर, श्योर श्योर, बट सर आई हैव ए रिक्वेस्ट, कॉल मी प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं सर। देखिए सर, गुरु गुरु होता है, चाहे वो छोटा है चाहे नो बड़ा है, नो मेरे लिए सब गुरु है। मैं सोच रहा हूँ, मैं अगर कितना ही बड़ा हो जाऊँ, मैं अ, मुझे कोई सर बोले मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं प्रिंस जी, जब हम सीखने का काम करते हैं ना, जो सीखने वाले होते हैं वो छात्र ही होते हैं हमेशा से, चाहे वो बस जितनी मर्जी एज बस। के बड़े हों। मैम आई नो, जस्ट बट आई डोंट सर लाइक ना, एज मैं हर बेंच में इस मैं पहले टाइम नहीं हम बोलता, मुझे सीख प्रिंस रहे हैं, बोलना। अभी हमारी लर्निंग चल रही है सर, जब हमारी टीचिंग होगी तब आप हमें मैम कह देना चाहे। एक चीज है, एज इज ओनली ए नंबर, दैट्स इट। यस। बस। सर मुझे को वो ना, मैं वो सब नहीं सोच रहा, पर मेरा आदत क्या है कि अगर आप मुझे सर बोलते हो ना, तो फिर एक ना वो गुरु वर्सेस वाला फीलिंग आया, अगर आप मुझे भाई बोलते हो या प्रिंस बोलते हो, तो अपनी फैमिली वाले मुझे फीलिंग आती है। तो आप मुझसे कितना ही पूछ लो रात में, इसलिए मैं बोलता हूँ, आप रात 2 बजे मुझे मैसेज कर लो, मैं 2 बजे के बाद सोता हूँ, मैं उस टाइम तक आपको हेल्प करेंगे तैयार। अगर आप मुझसे सर पूछते हो ना, तो क्या होता है कि आप जब भी व्हाट्सएप पे रहते हो या फिर किसी रहते हो ना, आपको ना उस टैबलेट में रहना पड़ता है कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट है, तो अगर मैं इस टाइप का फोटो लगाऊंगा इसके ऊपर इम्पैक्ट गलत पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं सर ना बनूं, मैं एज ए किसी का भाई, किसी का ब्रदर बन के रहूं, और मुझे ये अच्छा लगता थैंक यू, थैंक यू। ओके। है। तो मुझे सर मत बनाओ प्लीज। ओके, आई विल शो द ओके रेजर पे हाउ यू कैन यूज रेजर पे, ओके डोंट वरी इन द लास्ट वन। आई थिंक या आप लोग में कोई भी ब्लॉगर नहीं है, तो आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो आई हैव टू यूज ब्लॉगर, जस्ट आई विल शो द ब्लॉगिंग, जस्ट टाइप ऑफ ब्लॉग, ओके। ब्लॉग बनर, व्हाट्सएप ब्लॉग बनर, अगर आप ना कहीं भी जाते हो, ब्लॉग पोस्ट पढ़ते हो ना, लाइक आई इफ आई विल से टॉप 10 फोन, ओके, टॉप 10, टॉप 5 मोबाइल इन इंडिया, तो ये लोग क्या करते हैं, अभी देखो मैं दिखाता हूँ, मानो कि मैं ना इस वेबसाइट के ऊपर, फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, digi.in, जस्ट क्लिक ऑन द न्यू पेज। So I think he is not using any type of banner तो you can say ना, इस upon your website, okay, या इसने कोई banner यूज नहीं करा है, you can say this, but this is ad, you can see ना, this is ad by Google, okay, they are, you know, they are earning lots of money from the ad, and see this is sponsor, this is a Google ad, they are earning lots of money, you can say in 6 figure 7 figure earner every month. I am also on the way, I just hope I will सर कैनवा कैनवा पे ब्लॉग भी बनाया जा सकता है? sorry sir.
कैनवा पे ब्लॉग भी बनाया जा सकता है सर? नो सर, नो 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 नो। नहीं। कैनवा पे पता है, अगर आप कुछ भी करते हो ना तो आपके पास खुद का डोमेन नेम, ही इज ओन डोमेन नेम। ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू द हाउ यू कैन। सर अगर आप ना क्या करते हो, जैसे अगर मैं फ्रीलांसर बताता हूँ कि अगर आप ना किसी का कंपनी के साथ वर्क करना चाहते हो, लाइक जैसे स्मॉल कंपनी है, जैसे मैं ना एक रेस्टोरेंट है मेरे घर के आसपास ही बोल सकते हो, मैं बिहार से हूँ तो मेरे बिहार के आसपास है मेरे घर एक, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था। तो मैं उसको किस तरह प्रपोज किया था, क्योंकि मुझे ना उसके साथ वर्क करना था। उसका मुझे पता था कि इनका जो ब्रांड है ना, जो रेस्टोरेंट है, अच्छे खासे चल रहे हैं। अगर इसका ब्रांडिंग हो जाए नेट के ऊपर ना, तो ये कुछ और ज्यादा बूम कर सकता है। तो मैं इसको क्या किया था, मैंने इसको फ्री का बिजनेस कार्ड दिया था, फ्री का वेबसाइट दिया था, जो कि बताया था ना ये वेबसाइट इस टाइप का, ठीक है, मैं बना के दिया था। और उनको मैं दिया तो वो ना उसको ना बोला कि हाँ यार आपने बहुत अच्छा बनाया, मैं उसके साथ वर्क करना चाहता हूँ। सो दे आर पेइंग मी एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग विथ हिम। नो, ही इज अर्निंग मोर देन आई थिंक। उसने मुझे बोला कि प्रिंस, जब से मैंने आपके साथ वर्क करना चालू किया ना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था उसके बिजनेस को लेकर के। और आजकल के जो भी यूथ होते हैं ना, लाइक माय टाइप ऑफ बॉयज, everyone active on social media, girls active on social media and also kids active on social media, सभी को सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उनका जो भी होते हैं फूड्स, जो भी कुछ होते हैं ना, जब भी कुछ वो नया चीज लॉन्च करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको पोस्ट करते हैं, और उसको ना उसके ऊपर जब भी कभी होता है एड रन करते हैं। वहां से क्या होता है, जो लोकल होते हैं ना, वो होम टू होम करवाते हैं, अपना लेते हैं सामान, और वो कभी डिनर के लिए आते हैं, कभी लंच के लिए आते हैं। तो दे आर अर्निंग मोर देन आई थिंक बिफोर दिन। मैं जिस जब से था ना, उसके बाद उसने बोला कि मेरा अर्निंग दो दुगुना हो गया है। इस लोग मैं जस्ट स्टार्ट किया 2-3 महीने 4 महीने से हो रहा होगा। आई थिंक दिस इज 4 and 3.5 month approx. So they are earning. But you can't make a blog post and like this whole thing. If you have to create a single page, you can create and अगर आपको ना देखो, आपको अगर ब्लॉगिंग से अर्निंग करना है ना, तो क्या होता है, आपके पास ना खुद का डोमेन नेम होना चाहिए। दिस इज डोमेन नेम ओनली दिस वन, ठीक, डिजिट, ओके, .in ओनली, दिस इज द डोमेन नेम। आपके पास खुद का डोमेन नेम होना चाहिए, तब जाकर आपको ब्लॉग लिखना पड़ता है, तब जाकर ऐड आते हैं। जिस तरह आपको देखा होगा ना यूट्यूब के ऊपर ऐड आते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आपको ऐड आते हैं, और यहाँ से आपको इस ऐड से ना आपको रेवेन्यू मिलता है। मतलब दिस वेबसाइट इज अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, आई थिंक सो। आई थिंक यू कैन से द 6 and 7 approx 6 figure they can earn every month from this website, on a single website. Okay, yeah. So I'm saying the blog banner. Blog banner is upon your needs, which type dimension you want. Is up totally upon you. Okay, just if you want to create your anything, any type of domain, just click on the domain. Just create a design. Okay, according to your domain, according to your dimension, just choose your dimension and you can make your own design. Okay, so I just leave this one. I want to show you something here. If you are a fitness trainer, okay, you are giving the advice on the fitness. So what you can do here, is a something is something is to help you, like if you want to make your like a gymmer. Okay, I'm just saying you, I just come here and I just type the gym. Okay, मेन टाइम देखो क्या होता है, आप अगर यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर हो ना, सॉरी, इसके ऊपर लिख रहे हो ब्लॉग बोल रहा, तो आपको जो भी इमेज होता है ना, वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। मतलब आपका ये इमेज आपसे पहले कोई यूज ना किया हो, राइट। इस इमेज का आपके पास अथॉरिटी है इस इमेज को यूज करने की। अगर क्या करता है, गूगल आपको कॉपीराइट दे देता है, जिससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करती है। आप जब भी वेबसाइट में लिखोगे ना, आपको आपका सोर्स होता है कि आपको अर्निंग के पर्पज यूज कर रहे हो, तो आपको गूगल का जो भी गाइडलाइंस होते हैं, जो भी गूगल हैव मेनी गाइडलाइंस, यू हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइंस। इफ यू डोंट फॉलो द गाइडलाइंस ना, गूगल will decrease your you can say the decrease your performance. Okay, they will not help you to rank on the first page. Okay, yeah, this is first rank. Okay, this is first rank. So you have to follow the Google guidelines, so you can come on the top and you can earn money. Okay, yeah. If you are non अगर आपका कुछ भी आप मतलब कि आपका जो भी वेबसाइट है ना, वो लाइक कॉलेज है, स्कूल है ना, तो उस टाइप के लिए क्या है, आपको जिस टाइप वेबसाइट बनाना आप बना सकते हो। वहाँ पे आपको कोई भी गाइडलाइंस नहीं आते, क्योंकि आपको वहाँ से अर्निंग सोर्स नहीं है। ये वेबसाइट की अर्निंग सोर्स है, मेन सोर्स ये है, ब्लॉगिंग है। तो दे हैव टू फॉलो एवरीथिंग अबाउट द गूगल, अकॉर्डिंग टू गूगल। ओके, सो दैट्स थिंग्स। एंड आई एम अगेन सेइंग टू यू, अगर आपको कोई भी ब्लॉग बना रहे हो, अगर आपको अर्निंग के सोर्स करना है ब्लॉगिंग से,
So you have to use image. That one is free, copyright free. Okay. If you want to make your own image, so you can use image. So I just want to use this type of image. Okay. I just want to use this type of image. Just what I will do here. I just drag and I will do this type. So now see, I can use it is here. Okay. So इस अपन my niche ना according to your niche आपका niche किस टाइप का किस टाइप का niche वर्क करता है, तो आप अपने niche के अनुसार ना इसको बना सकते हो. Like I will say, if I will selling any protein and any type of dumbbell and type of fitness things, so I can use this type of measurement because this is so looking so attractive, and anyone if anyone see this image ना, they can stay and they can read my things what I will written here. मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी फील्ड में हो ना, तो जो दिखता है वो बिकता है, ये आपको हर जगह याद रखना. इफ यू मेक द बैनर इज अ गुड वे इन अ गुड थिंग्स, so everyone can see the banner and they can stop. Okay, they can stop and see the what you want to sell, what you giving the offer. Okay, so make a good banner. If you don't know how to make if you don't know anything about the designer, just I will again saying you just come on free pick. Okay, free pick. Here you get lots of design. अगर आपको यहाँ से भी नहीं मिलता है ना, आ जाओ गूगल के ऊपर, आपको किसके अनुसार चाहिए, आपको किसके अनुसार किस नीश के अनुसार आपको चाहिए आपका ब्लॉग सॉरी आपका बैनर, जस्ट टाइप योर नीश हियर and just saying to you best font. Okay, best font. I can see here lots of blogger now they can make the best font of. Okay, see this type of image you can use for your blog also, for your things also. Okay, they are मतलब यहाँ पे जो बंदे होते हैं ना, वो इस टाइप की इमेज बनाते हैं. See this image also ranking number 1. Okay, ranking number 1. This is ranking number 1. So you can also make this type of photos. You can get the ideas from here. Okay, you can get ideas from here also. You just search here what you want to search, and you get lots of ideas. See, if you are a bundle selling na, this is selling offer. It is good, right? So I'm just again saying to you, this is my image. Okay, this is my blog post image. आपको जिसका यूज करना आप इमेज को यूज कर सकते हो, it's totally free. Okay, no, this is your unique design. Okay, this is your unique design because you are using something is some dimension here, something is here, something is here. So this is, you can say this is your unique design. If anyone can use in future using this your this image na, you can give him a copyright. Okay, strike. You can claim that this is my own image. Why you using this type of image without my परमिशन? सो आपके परमिशन की बिना इस इमेज को भी कोई भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इमेज आपका हो चुका है और आपको इन द मैनर. सो हैव यू एनी प्रॉब्लम इन द बैनर बनाने में? कोई दिक्कत है आपको पोस्टर बनाने में? इट्स लाइक अ सेम पोस्टर बैनर. ओके, so other thing what I'm going to discuss about the business card. See, अगर आप शायद आप लोग कोई फ्रीलांसिंग वर्क नहीं करोगे, तो अगर कोई फ्रीलांसिंग वर्क करता है तो दे जस्ट कम हियर एंड जस्ट सर्च बिजनेस कार्ड. ओके, बिजनेस कार्ड. ओके, I just search business card and you also come here and just type business card. This is our fourth topic. Okay, I will show you today business card. Why did business card? Every business today want to make their own business. Okay? On business, they want to build their own business, so they need a business card. So what you can do if you want to work as a freelancer, you just give him a gift as a business card. Okay, you just give him as a business card for him. तो मैं अगर मुझे इस टाइप का बिजनेस कार्ड बनाना है ना, तो I can design this type of business card and I send to him. So sir, this is your business card. You can use this business card for your business. Okay, so this is lots of design here. You can see. Otherwise, you can come here and you will get lots of design here also. See, this is a simple one. Nothing is going to more difficult to create this one. I will show you one or two things. This is also simple one. 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 Okay. I just showing you this one, and I will take a two or three example how you can
make your own business card. If you are a businessman, you can create your own business card also from here. Just saying the business card, okay? I just type your business card. Okay, sorry, yeah, business card, okay? Business card. See, you get your business card size, okay? Size. Otherwise, if you have any unique size, na, just click on create a design. Just size your, just mention your hair, width and height. Just click on create. You will get. This is by default. I'm just using this default by default. Okay. Just click on create blank one. So this is my business size. Business size. I can work here. So I'm using this one. See, this one is very simple. I just want to show you again. I just come here. Okay. So what's the first thing I have to do? Okay, I will show you. Here you also get a lots of template here. Lots of template you can get here. You can see that your template, free template, is also looking good now. See, this is looking good, and you can use this one as if your say background. Right? See, this one is you can both apply. That's looking good, right? This one is I think this one is your front page. Okay, this one is backend page. Okay? In business there are two sides. Okay, if you want to use this type, this is also looking good. I love this one also. If you don't want, just come back and see the other design. If you want to choose any design, you can choose. Otherwise, I will say you how you can make your own business card. There are lots of things you can use. Lots of business card here. Lots of, okay. I just create. I just want to create my own business card. So I just delete this one. Delete. Delete one also. This is my blank sheet. Okay. This blank sheet now, and I can show you something here now also. It's the hair salon na spa one. So you can use this one also. It's also looking good one. Okay. It's also good one now. So now I just want to create this type of business card. I will show you how you can create. Just go on the your blank page. Okay. Just clicking on this one. Here now I can use one tool. If you want, you can use. Otherwise, you don't use because I'm a graphic designer. I will help the people to make their banner. So that's why I'm using this tool. Otherwise, you can leave. I just take a color. Okay, from here. Don't focus on this now. Now it will help me to make more faster. This I will come here and I will paste my color. Okay, here I get my color. Okay, and second thing is here now. This is a hexagonal. Okay, we are calling this a hexagonal, right? If I will wrong, then forgive me. So I just coming on element and search hexagonal. Yeah, here it is. Okay, this thing I will get here. And second thing I will you have to need here is it look like this one. No, this one. Okay, no, you can see here. Just rotate it. Which type design I want to make? See this one, this one backend. Okay, like this one. So I want to create this type of design. So just come here and rotate it 90 degree. It's look good now. Like it's good now. So some things look like this one. Okay. So I'm in center now. I just put on this one on the. I will drag this one. I just change the color of hexagonal. Okay. I just want to give the color of this one. So see this hexagon in the background in the back of this one. Okay. So I just click on here and I just want to bring front. Okay. Here it is now. I just want to put in center. It is center now, and I can say the hair color. Okay, yellow color.
I just come here and I just put the yellow color, something look like this one. I want to more deep, so I will just go there. Yeah. Okay, and this one is black. I can put the black one. Okay, and you now you have to one things you have to create in the background of shadow. All you can do shadow, just make it copy. Control C, Control V. Okay, it's your copy now. I just want to change this one color, so I cannot fix my things in the background. Just send in back, only back. Okay, so I can say this is in the back. It's something look like this. Okay, and what I have to do now, and just change this color like this one. Sorry. Now you can see now. Just come here now. Click and मैं इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर लेता, ठीक है. So I can use this type. So it's something look like this one, and you have to see now here. The shadow one is looking like this type. Okay, and this one is on top side, but here it is my. आपको यहाँ दिख रहा है मेरा ना, ये इसके ऊपर भी लाइक कर रहा है. तो मैं क्या करूंगा, जो बैकग्राउंड में येलो वाला है ना, उसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर लूंगा, ठीक है. So it's here now. It's totally upon you which type you want to create design. You can create. Okay, you can use this type of business card also. Just what you have to do now, just you type your text, just give your logo, anything what you want to give, just to give the logo and things. So this is your business card here. It's ready. So I can say digital those. Okay, I can put it in center, just down one. Okay, so this is now here. I can put my logo. Just type here, come here and just type in logo. I will get the logo. Just take in the random logo. You can use which type of logo I can use. I can use this logo. Okay. Sorry. Okay, something is here. You can see there. No. Control C. Okay, just come here. I can paste my logo here. Okay, so I can say this is my logo and this is my name. Here it is my business card. Okay, so it's look good now. You can put here text and here you can put your text. Okay, you can make it this type of your business card. I will show you one more business card, so you will get more clear. This is also easy. You just take a rectangle. Okay, sorry. Yeah, rectangle. Okay, you can make this type of also. This is also easy. You create one. This type you can also create. I will show you how you can create this type. Okay, it's something look like a different hard, but it's also too much easy. Just create a black one. Just come on element. Okay. What you have to do now? Here, just type of frame. Type of frame. What I have to do here now? I'm just going down here. Frame. Okay. Just I will use this image, and I will make it more bigger. So I can use this type. Okay. I just come on photos. I can use any photo. Okay. If I want to use, I'm just taking random photo. Okay. So I just put the this one. Okay, and I will make the circle, make the border of here. See, it's something to like this one. Okay, if I want to make the circle now, what I will do now here now, just come on element, take a circle from here. Okay,
just make it more bigger and like this one. Okay, send to back and make it some bigger now from here. It is now, just give the color. So it's your border now, just fix it and according to your design. Now it is your banner here, your, okay. So something look like this one. Okay, you can make similar way in the second one also. You can also create this one also. I will saying to you, you can create one of this one also, and many things you can create from here also. You can also design this type of things also. You don't say this is just too hard. It's not hard. See, this one is like a C type. Okay, you can use C type. This is hexagonal. Okay, you can use two hexagonal from here. Just use two hexagonal here. Okay, just saying Ctrl C, Ctrl V, and I will make it small now here, and just I will change the color of this one. Yes, I will make some little. I just decrease the brightness from here. Okay, I just come here and I just take this one. Something like this one. See, this design is something similar to this one. Okay, and you can also create a C type of things. Just come over here and you can use this one also. I will show you how you can do this type. If you don't know the designer, just try to copy the make and copy the other things also. You see where it is now. It's like in a C, like it's look like C now. Just come and make one more C. Okay, also here. I just showing you. Control V. And change the color. Okay, and what you can do here, just change the upper and the background color, so it will be look like something like this one. Okay, this is also easy. Here lots of business card you can choose according to your needs. Okay, according to your choice you can choose and make from the Canva also. Okay, and you have any problem in business card, you can ask me, so I will discuss the other thing also. Anyone have any problem in business card? सर आप ये कलर कोड कैसे लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो बड़े लिमिटेड कलर्स हैं हमारे पास ना, तो कलर कोड कैसे लेते हो आप? जो मीन्स क्लिक ऑन द शेप. ओके, मीन्स आपको शेप को क्लिक करना, जस्ट क्लिक ऑन द कलर. हियर यू कैन सी द कॉर्नर and just see the first one number is a add a new color. Okay, just click on this one and just see which type you want to color. See the down one. Okay, मीन्स अगर मुझे येलो चाहिए हुआ ना, मैं यहाँ पे येलो पे क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे येलो का सारा कलर मिल जाएगा. Okay, if I want to use sky blue, so I just click on the sky blue and I will use any sky blue color here, and I will click over here. I just use the any color from here. If I want black na, black is go down, you will get the black. Black code is 00000. If I want to use white, so go top of. Okay, it's a white and it's a down one is a black. You can use this type. Is clear now? Yes. And अब और किसी को कोई प्रॉब्लम कोई भी डाउट है तो आप प्लीज क्लियर. सब क्लियर है, सब क्लियर. Okay, so I don't think so. Resume you can also make from here. I just taken the resume. Okay, resume. Here lots of resume you can get here. I think you are all a teacher, no? Just you can suggest your student to make the resume from here. This one is paid one, but I think it's not looking good. If something is paid, it's paid. It's pro.
See, I will say now this one is paid one. See, this one is paid one. Right? Where it is now, it's a paid one. It's a paid one also. It's a paid one also. It's a pro version. This pro version you can't use before the paying. Okay. My screen is visible or not? Just say one thing. Right. Yes, visible. See, this is if I will download this one, it is showing me something is paid one. Okay. So what I can do here now, just see which element is paid one. Which element is paid one. Just make your cursor. Okay. They will show you where you have to pay. I will say this one is no, not this one, not this one. See, this one is paid one. Okay. This element is paid one. For this element you have to pay. Then you can able to download. If you don't want to not, if you like this one, but it is paid one. What you can do here? Okay, just ungroup it. Firstly, I have to ungroup. Okay. This one, I will just ungroup it. It's ungroup now. Here it is now. So this is paid one, this is paid one, and this is also paid one. If I will delete this all now, if I will delete this all, so I can use this resume for as a free. Okay, something also here paid one. Just see which one is paid one. See, this things is paid one. Okay, this I think this font is paid one. What you have to do, just delete this font. Okay, just I'll just send it to you. Okay, just edit, copy the page, copy the element. Okay, just I was saying now, this I will delete this one. I just going to deleting this one. What is the element? See, this element is don't pay. Okay, this is the location one. What I do, just I will go there and go there. I just delete this element. Okay, I can see what's element here. I will delete every element from here. Paid element. Okay? मतलब इसके रिज्यूमे के हर एक ऑप्शन पे जाके हम चेक कर सकते हैं, जहाँ पे भी ऐसे हाँ, सो अगर उस आपको ऑप्शन को डिलीट कर दो, है ना? हाँ, अगर आपको कुछ पसंद आता है ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हो. अगर पेड वन हुआ तो पेड वन में दे विल अच्छा, ट्राई टू गिव हाँ, वो दे विल रिमूव गिव द फ्रॉम ट्राई. वाटरमार्क ऐसा लिखा आता है ना, तो तो वो सी पहले हियर इट इज. हटा दें तो फिर अपना कर सकते हैं हाँ, सो यू कैन सी आप यहाँ से एडिट. ना इजी इसको डाउनलोड कर सकते हो. ओके. Free one, okay, free हो गया. Otherwise you have lots of option also. You can use this free one. I also love this type of CV. Okay, I love this one also. You can see the other thing also. Okay, you know, in my college lots of I'm in fourth year student. I have lots of batchmate also. They are saying I don't know how to create a resume. I also give him to link join my class, and they don't know how to design. They are saying the sprints create for me. They are also try to pay me. I don't want to take money from my friend. So this type they can create, but they don't know to create. How they can create from easily. So this is format you can get here and just click. You can edit everything. Okay, I just saying this is my name is Prince Kumar. Just trying Prince Kumar. Okay, get in touch. I can edit my number and everything. I just click on download. Send me the PDF. And ma'am, I will show you one thing. You say na how you can give the link in the PDF. I just give them my link website name here. Okay, this is my website. If I will give the link on my website na, so just I will type here my website name.
those.in. Okay. So what I do, just I will click this one and I will make the link here. लिंक Okay. So I can apply from here, and this is going underline. I just they don't want to be underline. Okay. So I just click on and I just download it. डाउनलोड एज पीडीएफ फॉर्म. हाँ, पीडीएफ फॉर्म में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. अगर पीडीएफ फॉर्म में कर दो तब लिंक वर्क करती है. तो यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो चुका है. मैं इसको ना ओपन कर लेता हूँ. चलो ये ना ओपन हो चुका. ठीक है. अब ये पीडीएफ ओपन हो चुका है. अब आपको यहाँ दिखना है कि आपको पीडीएफ यहाँ पे लिंक वर्क करता है नहीं करता. देखिए यहाँ पे ना आपको दिख रहा है ये लिंक वर्क कर रहा है. अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरी वेबसाइट खुल जाएगी. अगर आपको देखो यहाँ पे ना कुछ और दिखा रहा है, पर यहाँ पे ना वो दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे ना मेरी लिंक वर्क करने लगी. अगर आप पीडीएफ में किसी को कुछ भी सेंड कर दो ना, आप लिंक दे सकते हो एज ए हाइपर लिंक. ओके. So the link will be working on PDF, but not in image. ओके. Now, you can ask your doubt in this topic. इस टॉपिक में कुछ भी आपको डाउट है तो मैं डाउट पूछ सकता हूँ. मैंने आज बताया था वेबसाइट किस तरह बना सकते हो. ब्लॉग पोस्ट, पीरियड योर लर्निंग पेज इज सेम, एंड बिजनेस का डिजाइनिंग एंड पावरफुल रिज्यूमे. थैंक यू प्रिंस. कोई चीज अगर होगी तो कल आपसे जरूर पूछेंगे. यस सर, श्योर. आप में से जो मुझे अच्छा लगता है बताना, हेल्प करना. थैंक यू. आई एम ऑन द लाइफ हियर कैमरा. थैंक यू. थैंक यू. So if doubt you can ask me, otherwise so you can go. Thank you. Thank you, ma'am. Prince, call me Prince, please. मैं यहाँ पे 10 मिनट और हूँ. आपको अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आप आज का क्लास लीड कर सकते हो. सलील शर्मा, थैंक यू सो मच सलील शर्मा सर. एंड कॉल मी प्रिंस प्लीज. प्रिंस सर, ये हमारा इनकम सोर्स भी बन जाता है. प्रिंस जी, आप म्यूट हो. हाँ हाँ जी, हाँ जी, बताओ. यस, मैं भी पूछना चाह रही थी, मतलब ये हमारे इनकम सोर्स भी बन सकते हैं. हाँ, अगर आप वर्क करते तो मेरा इनकम सोर्स यही है, आपको पता होगा. अगर वर्क करते हो तो. हाँ, अच्छा. प्रॉपर. तो मेरा ना डिजिटल मार्केटिंग क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ इधर रिसेंटली. तो आप ना डिजिटल मार्केटिंग क्लास अटेंड कर सकते हो. मैंने वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि फेसबुक या गूगल ऐड किस तरह वर्क करते हैं. सारा कुछ A to Z आप वो अटेंड कर सकते हो.
आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी आइडियाज मिल जाएगा। पर आपको कल क्लास में ना मैं बताऊंगा कि आप खुद की जो डिजाइन करते हो, लाइक वेबसाइट पर डिजाइनिंग कर रहे हो कैनवा के ऊपर, आप उसको किस तरह सेल कर सकते हो, ठीक है, आप स्टार्टिंग किस तरह कर सकते हो। तो ये एक अच्छा, नहीं मोस्ट हमारा टॉपिक जैसे है। टीचिंग फील्ड है तो फिर उस टीचिंग फील्ड में इसका टीचिंग यूज। फील्ड में अगर आप हो तो फिर आपको टीचिंग में फोकस करना पड़ेगा। अगर आप खुद देखो, अगर आप चाहते हो ना कि मल्टीपल वर्क करें, मल्टीपल वर्क करना आज के टाइम पे हाँ मुझे लगता है जरूरी है। तो जी। तो आप ट्राई कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। अदरवाइज इफ यू आर कंफर्टेबल इन योर जोन सो इट्स ओके फॉर ऑल्सो। देन ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बैनर उन्हें कुछ बनाना है तो आप वो बना सकते हो। हाँ वो ऐसे हमें प्रोग्राम्स वो इसलिए पूछ रही थी मैं, जैसे लिंक का वो तो क्लियर हो गया, पर वही जैसे मतलब ये नहीं अभी हुआ कि जैसे मैं अपना उस प्रोग्राम के लिए गूगल मीट का लिंक डालूं या ऐसा कुछ डालूं तो वो हो जाएगा ना, वो तो या वो पीडीएफ से हो जाएगा। आप पीडीएफ फोल्डर में हो जाएगा। ठीक है। और बाकी आप जो ऑफलाइन बताना चाह रहे थे उस टाइम रिकॉर्डिंग चल रही थी, अभी भी चल रही है ऐसे। ओके ओके, मैं इस करके नहीं ऑफर लेता ना। आपको क्या बताना था मुझे? एक तो